Hello, good afternoon, students. Good afternoon. Am I audible and visible? Okay. हाँ करण आनंद बिल्कुल ला सकते हो, अभी स्टार्ट कर आप आराम से ला सकते हो. ठीक है. 6 months is sufficient enough and you have more than 6 months, so I am very sure आप जरूर सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो if you start now. करण आनंद कंप्यूटर साइंस में जरूर ला सकते हो. जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि I have guided students studying for 3 months जिसका नाम क्रैश कोर्स होता था. सो 3 months के कोचिंग के बेसिस पर भी, 3 months की स्टडी पर भी आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग 2 digit रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, क्वाइट पॉसिबल. तो आपके पास तो एम्पल टाइम है, 6 months का टाइम है. आई एम वेरी श्योर दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ. तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स. वेलकम टू अनअकैडमी. डॉक्टर खलील खान हियर, वेलकमिंग यू टू नया आगाज सीरीज कंटिन्यूएशन ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स. और आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन रहेगा इन द डोमेन ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे. इफ यू रिमेंबर एंड रिकलेक्ट, पिछले क्लास में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का देखा था. उसका परफॉर्मेंस आज देखेंगे और परफॉर्मेंस के बाद नए एल्गोरिथम भी देखेंगे. एंड इफ पॉसिबल वी विल आल्सो वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स. ठीक है. स्टार्ट करने से पहले जस्ट टू रिमाइंड यू दैट दिस इज my official Telegram channel, and if you have not registered, you can basically join this group for guidance, for doubt clearance, and any other clarification that you want, any other questions you want to ask, you can do so by joining this group. Okay, chaliye. So let me write down here. So main topic is CPU scheduling. And within that, we say performance of shortest job first, and that also implies for SRTF, for both. For both shortest job first and SRTF. Remember in the last class हमने देखा था, हाँ, युवराज सिंह, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के 2 वर्जन है. वन इज प्रीएम्प्टिव एंड द अदर इज नॉन प्रीएम्प्टिव. ओके. यस वर्मा, HC वर्मा, यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, यू कैन आस्क. तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस इशू. सो वी नो दैट इनहेरेंटली, लिसन टू मी, we know that inherently shortest job first always favors shorter processes. These are inherent characteristic. It always favors shorter processes. Favoring shorter process हम बोलेंगे कि has an advantage and drawback both. We have advantage and we have drawback. The advantage is, this is important, the advantage is it will result in maximization of throughput.
it will result in maximization of throughput. Throughput कहो आप, you can even say efficiency. Throughput का मतलब है the number of processes completed per unit time. That is called throughput. तो आप पूछ सकते हो कि सर ये throughput कैसे maximize होगा? Very simple. In a duration of time, listen to me. In a duration of time, आप कोई अगर duration लो, with the nature that you are favoring always shorter processes, with the characteristic that you are favoring shorter processes, तो क्या होगा? In a duration of time delta t, we can complete more number of processes. तो जैसे ही you complete more processes in some duration of time, तो क्या होगा? Throughput will increase, because throughput is a measure of number of processes completed per unit time. वर्मा, नथिंग टू वरी. अभी मैंने अब कहा बेटा समझिएगा, अगर आपके पास सिर्फ 3 to 4 months भी हो तो आप आराम से गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो. एच.सी. वर्मा, नथिंग टू वरी अबाउट इट, एक्सेप्ट दैट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, अपना एक एक्शन प्लान बनाइए, राइट, एंड देन यू स्टिक टू दैट एक्शन प्लान. देन आई एम वेरी श्योर with a consistent composite study, smart study, definitely you can complete all the subjects and get a good rank in GATE 2025. H.C. Verma. Okay, so chaliye, coming back here, we can complete more number of processes in a duration of time, so therefore that will result in maximization of throughput. Then eventually this will also result in, let me write down, this will also result in minimization of average turnaround time and average waiting time. And recollect, boys and girls, that earlier occasion हमने देखा, पिछले क्लास में हमने देखा कि an ideal scheduling technique, an ideal scheduling algorithm is one, या फिर आप कहो an optimal scheduling technique or optimal scheduling algorithm is one, which will result in maximization of throughput, minimization of average turnaround time and minimization of average waiting time. That is an ideal or optimal scheduling technique. And if you observe here, the shortest job first is achieving both the things. It is resulting in maximization of throughput and minimization of average turnaround time and waiting time, right? So because of this we say shortest job first is an optimal algorithm, ideal algorithm. लेकिन these benefits, this idealness or optimality will not come free of cost. ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगे. It will have some drawback. Can anybody please tell me in the chat box, okay, what is the drawback of shortest job first? Let me see. Can you tell me what is the drawback of shortest job first? Shortest job first का drawback क्या होगा? वंशी प्रणय, नहीं बेटा, कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होगा. कॉन्वॉय इफेक्ट आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से होगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग वुड सफर फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होगा. पवन कुमार, कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट? और एनी अदर स्टूडेंट, वर्मा, करण आनंद, एक्सेट्रा, व्हाट इज द इनहेरेंट ड्रॉबैक ऑफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट? हाँ, बस आई एम नॉट गिवन इन ए प्रियोरी, बिल्कुल सही बात है, राइट. वो तो हम बोलेंगे लिमिटेशन होगा, लिमिटेशन, लेकिन उससे पहले अगर फर्ज करिए if somehow you are able to implement, अगर आप किसी भी तरह implement कर सक रहे हो या कर पा रहे हो, then also what is the drawback of shortest job first? The drawback of shortest job first will be, let me write it down here, it will lead to starvation. To which processes? Longer processes. Longer processes का मतलब क्या है? Longer processes का मतलब those processes that have higher burst times, greater burst times. तो वो processes will always be getting or subjected to suffer from the problem of starvation. ये problem. बिल्कुल सही बात. तो leave apart this advantage and drawback at the right step, as Pawan Kumar has said. Leave apart this advantage or drawback. At the first step or first instance हम बोलेंगे the inherent setback or drawback of shortest job first is practically non-implementable. आप बोलोगे या पूछोगे कि सर ये क्यों? Because if you see the criteria of shortest job first,
शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का जो क्राइटेरिया है, yes, I will reply cricket temper, I will reply in between. Just hold on, let me complete some topic. Cricket temper, please wait for some time. थोड़ी देर में आपका आंसर करूंगा मैं, ठीक है? So it is practically non-implementable. Why is it not implementable? उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है burst time. Okay, its criteria is burst time. Burst time is the amount of time the process need to run on CPU and complete its execution or leave the CPU. Burst time वो है जो प्रोसेस रन करेगा CPU पर, जो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन करेगा CPU पर, वो है burst time. तो व्हेन ए प्रोसेस एंटर इनटू द रेडी क्यू, आप विदाउट रनिंग ऑन CPU आपको burst time पता ना होगा. You will not be knowing the burst time. So therefore the question is, how are we going to implement shortest job first अगर आपको burst time पता ना हो. कहने का मतलब यह है, इमेजिन कीजिएगा एक सिचुएशन और सिनेरियो, लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस रेडी क्यू एंड दिस इज द CPU. This is the CPU. So at some point of time, so let us write here, this is the ready queue. And in ready queue at some point of time, 3 processes enter the queue, PI, PJ, PK and this is the CPU. अब आपने डिसाइड करना है कि which process should run next on to CPU. ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए burst time. लेकिन burst time आपको पता ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ने अभी, कोई भी प्रोसेस ने CPU पर रन नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा आपको burst time? So therefore, practically shortest job first is non-implementable because we don't know the burst time. A priori मतलब beforehand. तो फिर क्वेश्चन आएगा, सर अगर पॉसिबली नॉन इंप्लीमेंटेबल हो, अगर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इंप्लीमेंटेबल ना हो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग एसजेएफ? व्हाई आर वी स्टडीइंग एसजेएफ? पिछली सारी की सारी क्लास हमने एसजेएफ ही पढ़ा, एसजेएफ एंड एसआरटीएफ. देन व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग एसजेएफ? द रीजन इज सिंपल. ऑफ कोर्स इट इज प्रैक्टिकली नॉन इंप्लीमेंटेबल. Then why do we have? The reason is very simple. The reason is, as it is theoretically a best algorithm, or basically you can say theoretically an optimal algorithm. So there are 2 reasons for using SJF. It is used as a benchmark. देखिए आपके नोट्स के लिए पूरे पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं यहां पर. It is used as a benchmark. It is used as a benchmark to assess or compare the performance of other techniques or other algorithms with respect to SJF. ये है benchmark. हम बोलेंगे benchmark analysis. So when it is practically non-implementable, it is used because it can be used as a benchmark to measure the performance of other algorithm to find out which algorithm is closer in performance to SJF. सर ये कैसे करेंगे? You can write a simple C program, C++ program, Java या Python program for SJF, for other scheduling technique like FCFS, LCFS, round robin, shortage of first priority, सभी के लिए, ठीक है? You can write a C program and then you can supply the data set जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, and then you can measure average turnaround time, waiting time, throughput, efficiency, etc. And then you can compare relatively which algorithm is closer in performance to SJF. So that is reason number 1. This is reason number 1 for using SJF. To use SJF as a benchmark to measure the performance or compare the algorithm of SJF with respect to other techniques in order to find out which algorithm is closer in performance to SJF. ठीक है? So that is one reason. The second reason is, of course, it cannot be implemented with real burst time, but it can be implemented. SJF can be implemented with predicted burst time. Now this is a new concept. Look at this. It is saying predicted burst time. That means without running on CPU, without process running on CPU, जैसे ही process ready queue में आएगा, कभी भी ready queue में आएगा, नेक्स्ट टाइम जब रन करेगा CPU पर, आप विदाउट रनिंग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए प्रोसेस रन करेगा. यह है प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम. जिस तरह ये जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर फोरकास्ट करता है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री, इसका काम क्या है? प्रेडिक्टिंग द वेदर. तो कई बार वो प्रेडिक्ट करेगा कि कल या आज काफी बारिश होगी, काफी रेन होगी, राइट, या हीट वेव रहेगी. इट इज अ प्रेडिक्शन.
The prediction may be correct, prediction may be wrong, but we cannot say for sure that prediction is always right. It may be right, may not be right, but after all, it is a prediction. तो उसी तरह, listen to me, when these three processes, imagine these three processes come into the ready queue at time Ti. So without running on CPU, how can we predict how much time Pi may take, how much time Pj may take, how much time Pk may take? कुछ टेक्निक होना चाहिए, कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए to predict the burst time of the process. तो कैसे करेंगे? So in the literature, of course, there are many prediction techniques, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस या इंपॉर्टेंट है वो टेक्निक मैं आपके साथ डिटेक्ट करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा. देखिएगा, एक्चुअली वी क्लासिफाई द प्रेडिक्शन टेक्निक्स इनटू टू टाइप्स. यस पवन, दैट्स करेक्ट. इनटू टू टाइप्स. We have static technique and dynamic technique. Static in the sense that that static technique will predict the total burst time of the process. Total burst time कैसे predict करेंगे? For example, I am showing some techniques. Like you can take the process size. See, very simple process size. Imagine, for example, if I receive a new process of size 100 kb. New process of size 100 kb. अब आप इसका total burst time predict करना चाह रहे हैं. That means during its entire life cycle जब वो process run करेगा, आपने उसका total prediction time determine करना है या predict करना है. ठीक है? Don't worry, Karan, we'll discuss after the end of the class. We'll discuss. Okay, don't worry. So new process arriving for the size of 100 kb. अब आपने determine करना है कि total how much time के लिए process run करेगा. Total burst time कितना होगा? तो one simple approach is by using the size of the process. तो हमने देखना होगा पिछले हिस्ट्री में, अर्लियर ओकेशन, पिछली हिस्ट्री में क्या have we completed a process of similar size? ये हम देखेंगे. Right, based on the size of process. So I would say that maybe I have earlier occasion completed a process of size 102 kb, similar size है, almost 100 kb, 102 kb. Let's say we completed this process. और बच्चों जब complete हो जाएगा process तो हमें पता चलेगा what is its burst time. We know what is its burst time. Say for example, we know that this process has taken a total of 15 units of time. 15 units of time. तो हम logically conclude करेंगे. Exactly, this is just like training a machine, right? Training a machine learning. Regression model है. Look at the previous conditions and estimate the next process burst time. So we have completed this process of similar size taking 15 units. So my new process is also same size. So I may think that, I may perhaps guess, शायद हो सकता है ये भी मेरा process, ये भी process may take 15 units of time. This prediction based on size. Prediction based on size. So look at the size and try to predict. This is one approach under static scheme. Under static scheme. हाँ, क्रिकेट टेम्पर मैं अभी बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन. मैं आपका डाउट और एक स्टूडेंट जिन्होंने पूछा था डाउट में बोलूंगा आपको. डोंट वरी, हैव सम पेशेंस, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक. अदरवाइज क्या होगा, मैं डाउट लूंगा तो फिर अगेन कंटिन्यूटी चले जाएगी. हैव सम पेशेंस. क्रिकेट टेम्पर, ठीक है. सो आई कैन टेक, सो दिस कैन बी करेक्ट और दिस में बी रॉन्ग. या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि वी डोंट नो whether this process completed normally or has it got completed abnormally. Whether this is implemented, ये हो सकता है recursive implementation हो या non recursive implementation हो. तो बच्चों कई paradigms हो सकते हैं जिसके बेसिस पर processes differentiate हो सकते हैं या different होते हैं, जिसके बेसिस पर ये जो prediction आप कर रहे हो, it may be right, it may be wrong. After all, it is a prediction and prediction may be right, may be wrong. लेकिन एक approach है. So these are static techniques. If not size, you can even predict based on type of process. आप प्रोसेसेस के कैटेगरीज बना सकते हो, लाइक ओएस प्रोसेस, फोरग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस, एंड देन बैच प्रोसेस, समथिंग लाइक दैट. एंड देन यू कैन सी द हिस्ट्री ऑन एन एवरेज. एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस इज टेकिंग हाउ मच टाइम, एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इज टेकिंग हाउ मच टाइम, फोरग्राउंड बैकग्राउंड प्रोसेस कितना एवरेज टाइम ले रहे हैं. तो तभी भी कोई एक न्यू प्रोसेस आएगा तो आप उसका साइज, आप उसका टाइप डिटरमिन करोगे. पवन कुमार, नॉट साइज, टाइप. Is it OS? Is it foreground? Is it background? Is it backup? And then accordingly you can take from the previous range of the times how much time OS process is taking, how much time interactive process is taking, background, foreground process is taking, and accordingly you can predict. So boys and girls, this is one way of predicting absolute burst time of the process, total burst time of the process. This is static approach. Lekin more important is dynamic.
Now यहाँ पर confusion, this static and dynamic, boys and girls, is my terminology. It is not in the textbook or anything, it is my terminology. Static, I mean to say that you are predicting the total burst time of the process. लेकिन डायनामिक टेक्निक में हम ये बोलेंगे कि the process will not be predicting the total burst time of the process, but we will predict what is meant by the next burst time, CPU burst time of the process, next CPU burst. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि what is next CPU burst, what is next CPU burst. So predicting the next CPU burst is a very important technique. Predicting next CPU burst of the process. This is like burst of process. So this is what I am calling it as a dynamic approach, because you keep on predicting the burst times of the process, next CPU burst time of the process. So that's why this is an important topic. So questions were asked in earlier papers based on this, and in future also you can expect questions on this topic which I am going to discuss. So सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि सर इसका ये मतलब क्या है, What do you mean by next CPU burst? इसका मतलब हमें समझना है. तो सुनिएगा प्लीज. I will try to explain by means of a diagram. एक सिंपल डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि what is the meaning of next CPU burst? What is the meaning of next CPU burst? So please have a look on this. So we'll imagine that this is nothing but process life cycle. We'll imagine that this is the process life cycle. यहां से आपको समझ में आएगा कि next CPU burst का मतलब क्या है. So this is the process life cycle. ठीक है. This is arrival time of the process. Process इस टाइम पर अराइव हुआ, तो बेटा कहां अराइव होगा, रेडी क्यू में अराइव होगा. ये जो टाइम स्पेंड करेगा रेडी क्यू में प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे वेटिंग टाइम. इसके बाद प्रोसेस विल रन ऑन सीपीयू फॉर सम टाइम, विल कॉल दिस एज सम बर्स्ट BT1, एंड देन द प्रोसेस में गो फॉर सम IO ऑपरेशन, लेट अस इमेजिन. सो दिस सम IO बर्स्ट. ठीक है. फिर उसके बाद प्रोसेस आएगा रेडी क्यू में, वेट कर रहा है रेडी क्यू में, वेटिंग टाइम 2. देन इट रन्स ऑन सीपीयू अगेन, फॉर अनदर बर्स्ट, सेकेंड बर्स्ट. ठीक है. अब इसके बाद इट गॉट प्रीएम्प्टेड हियर एंड कम बैक टू रेडी क्यू. सो इट इज वेटिंग इन रेडी क्यू नाउ, W23, वेटिंग इन रेडी क्यू नाउ. तो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, कहना यह है कि व्हाइल इट इज वेटिंग इन रेडी क्यू, यहां पर जब वेट कर रहा है प्रोसेस रेडी क्यू में, फॉर व्हाट, फॉर रनिंग ऑन सीपीयू. शायद इमेजिन that next time when it gets onto CPUs at this particular point of time. So यहाँ पर while at time t remaining in ready queue, we want to predict कि how much time next time it is going to run on CPU. Next time जब रन करेगा CPU पर कितने टाइम के लिए रन करेगा, ये है concept of next CPU burst. Generally people fail to understand this, so please follow carefully. Next time process is waiting in the ready queue. Process is waiting in the ready queue to run on CPU. तो मतलब while waiting in ready queue we would like to predict कि next time जब रन करेगा CPU पर कितने burst time के लिए रन करेगा. That is called next CPU burst. So next CPU burst is always computed. The next CPU burst is always computed when the process is waiting in the ready queue. When the process is waiting in the ready queue. आप यहाँ पर पूछ सकते हो, सर ये पहली बार जब आया यहाँ पर वेट कर रहा था, यहाँ भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. सर यहां पर भी रेडी क्यू में वेट कर रहा था, क्या हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हाँ, एवरी टाइम व्हेन इट इज वेटिंग इन द रेडी क्यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट. तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर थर्ड टाइम के लिए मैं लिया हूं, राइट. सो दैट मीन द प्रोसेस हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हाउ मेनी बर्स्ट? सर इट कंप्लीटेड 2 बर्स्ट, BT1, BT2. नाउ इट इज वेटिंग फॉर थर्ड बर्स्ट, और हम थर्ड बर्स्ट प्रेडिक्ट करने वाले हैं. कैसे करेंगे? दैट इज डन बाय मींस ऑफ एन एल्गोरिथम, बाय मींस ऑफ एन अप्रोच, बाय मींस ऑफ अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग टेक्निक. ये टेक्निक ऐसी है जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है. मशीन लर्निंग में आपने पढ़ा होगा, दोज हु आर familiar with machine learning, this is purely a linear regression model of the types of machine learning algorithms. Linear regression, exponential averaging technique, and the ideology of this is exactly similar to I'm saying in networking you have exponential backoff algorithm in MAC protocols. CSMA/CD में exponential backoff algorithm use करते हो आप, उसी तरह की टेक्निक है यहाँ पर exponential averaging technique. So let us try to understand exponential averaging technique for predicting the next CPU burst of the process. So let me write the heading, exponential averaging. काफी important topic है, exponential averaging technique to predict
the next CPU burst time or CPU burst of process I. Predicting the next CPU burst of process I. चलिए यहां पर बच्चों थोड़ा नोटेशन डेवलप कर लेते हैं, राइट? सो लेट अस से लेट PRI बी प्रोसेस, ठीक है, एंड लेट अस से TI, नोटेशन TI डिनोट द कंप्लीटेड बर्स्ट ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस ने अपना बर्स्ट कंप्लीट कर चुका हो, कंप्लीटेड बर्स्ट टाइम. लेट tau I, दिस सिंबल इज रेड एज tau I is the predicted burst time. ठीक है? And based on this we will say that let tau n plus 1 denote next CPU burst. So obviously it is predicted next CPU burst. तो n plus 1 का मतलब है next, n plus 1 का मतलब है next. तो मतलब ये हुआ n plus 1 is next, so that means it has already completed n CPU burst. It has already completed n CPU burst. N plus 1 is next. जैसे अगर डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो, look at that. If you look at the diagram and see how many bursts it has completed, this fellow has completed 2 bursts so far. So let me write this first burst T1 and it has completed the second burst T2. Now it is waiting for the third burst in the ready queue. Matlab, here in the ready queue we would like to measure tau 3, third burst, tau 3. 2 we completed. So we are waiting for ready queue for third burst. So we want to predict tau 3. So n plus 1 is 3 here in this diagram. So n plus 1 indicate the next CPU burst. So that means we completed n burst. So how are we going to predict? What is the formula given for the prediction of tau n plus 1 and why is this called exponential averaging? ये सभी चीज understand करने की कोशिश करेंगे. So boys and girls, please have a look. The value of tau n plus 1 or the formula for tau n plus 1 is given as alpha Tn plus 1 minus alpha tau n. So if you observe this diagram carefully, boys and girls, if you observe this equation carefully, you will find that tau n plus 1 is measured again in terms of tau. That means in terms of previous value, n is the next value. So n plus 1 is next value, n is the previous value. So you are training based on the previous values. Training the next based on the previous. You are predicting the next based on the previous value. इसलिए मैंने कहा linear regression. So tau n plus 1 is alpha Tn plus 1 minus alpha tau n. Where alpha is a constant lying between 0 and 1. Logically it should not be 0 and 1 because अगर alpha की value आप 0 ले लो, what does alpha indicate? I will tell you shortly. Alpha अगर आप 0 ले लोगे तो tau n plus 1 will be simply nothing but tau n. मतलब whatever you predicted earlier, you are taking the same prediction time for the next. इसी तरह if alpha you take 1, then tau n plus 1 will be Tn. It will be same as the previous completed burst. तो हमें दोनों को वेटेज देना है. दोनों मतलब क्या है? दोनों मतलब previous completed and previous predicted. So if you want to give weightage to both previous completed and previous weighted, how much weightage is supposed to be given is controlled by the value of alpha, is given by the value of alpha. If alpha becomes, let us say, if you want to give equal weightage to both of them, then naturally alpha should be half. Because if this is half, this will also be half. मतलब you are giving equal weightage to both the previous completed and previous predicted. If अगर आप 70% weighted previous completed को देना चाह रहे हो, make alpha 0.7, then 1 minus alpha will become 0.3, 30%. So इस तरह you can basically put a control how much weightage you are giving to this. So boys and girls, this is how we are going to basically use the formula for exponential averaging to predict the next CPU burst. अब आप यहाँ पर पूछोगे, sir, why is this called exponential averaging? Why is this called exponential averaging? To understand that and to answer that question, you have to look at that equation tau n plus 1 from the perspective of mathematics. Mathematics के perspective से देखिए, what kind of mathematical equation is this? This is a mathematical recurrence.
If you consider tau n plus 1 as a function in terms of input n plus 1, it is computed again in terms of tau with input n decreasing function. n plus 1 n. अगर n होता n minus 1, n minus हो तो n minus 2. So this is a purely mathematical recurrence, and one of the universal method for solving recurrence relations is substitution method, बैक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अगर आप ये इक्वेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करो, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस बाय मींस ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, सो आई विल राइट अगेन tau n plus 1 look at this is equal to alpha tn plus 1 minus alpha tau. If you call this as equation 1, अगर आप बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग. चलिए स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tau n. तो व्हाट इज tau n? अल्फा tn. देखिएगा अगर n प्लस 1 हो तो n, अगर n होगा तो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा tau n माइनस 1. राइट दिस एज इक्वेशन 2. तो ये जो tau n की वैल्यू है, यू सब्स्टिट्यूट बैक इन इक्वेशन 1. यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड रीराइट tau n प्लस 1. रीराइट, तो रीराइट कैसे करेंगे? tau n प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा tn, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू दिस वैल्यू वी विल राइट अल्फा tn प्लस 1 माइनस अल्फा tau n माइनस 1. इसके बाद आप एक्सपैंड कर दीजिए इसे, इट बिकम अल्फा tn प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू tn माइनस 1, tn माइनस 1 है, सॉरी, tn माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर tau n माइनस 1. इक्वेशन 3. आफ्टर वन लेवल ऑफ एक्सपेंशन, आफ्टर एक लेवल ऑफ एक्सपेंशन ये बनेगा. So earlier I was having 2 terms, now I have 3 terms with tau n minus 1. So देखिएगा अल्फा tn प्लस 1 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा tn माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर tau n माइनस 1. विदाउट लूजिंग एनी जनरलिटी, अगर tau n माइनस 1 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करके यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा? एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, एक और लेवल पे. So next level it will become alpha tn plus alpha into 1 minus alpha tn minus 1 plus alpha into 1 minus alpha square tn minus 2 plus 1 minus alpha cube tau n minus 2 बनेगा. ऐसे आएगा नेक्स्ट लेवल पर इक्वेशन 4. So this keeps on decreasing. Tau n minus 1, tau n minus 2, tau n minus 3, like that it goes on until so it goes on until it reduces to tau n because it's decreasing. अगर n की वैल्यू 3 होती तो 3 minus 2 1 होता, n की वैल्यू 4 होती तो n minus 3 पे 1 हो जाता, until it become tau 1. तो सुनिएगा प्लीज, tau 1 क्या है? When you look at the diagram, tau 1 is the time when the process arrived into the ready queue for the first time and you are predicting it. तो अब देखिएगा tau 1 के लिए वी डोंट हैव एनी प्रीवियस कंप्लीटेड बर्स्ट. मेरे पास कोई प्रीवियस कंप्लीटेड बर्स्ट नहीं है. फर्स्ट टाइम जब रेडी क्यू में आया तो tau 1 will always be taken as some initial guess. This will be given as some initial guess value. Initial guess tau 1. और सेकेंडली मैं आपको बताऊं मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, रिकर्शन में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, राइट, कि जो भी रिकर्शन होगा, रिकर्शन के लिए सॉल्व करने के लिए, रिकर्सिव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन देना जरूरी है. विदाउट बाउंड्री कंडीशन, विदाउट इनिशियल कंडीशन यू कैन नॉट डिटरमिन एनी अदर फंक्शन वैल्यू. लाइक फैक्टोरियल ऑफ n is equal to n into factorial of n minus 1. So unless I give the initial condition that factorial of 0 is equal to 1, आप factorial की वैल्यू, कोई भी factorial की वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते. So that is the boundary condition. So this is also boundary condition, tau 1. So given the value of alpha, boys and girls, given the values of alpha and given the value of tau 1, given the value of tau 1 and alpha, you can always predict the next CPU burst of the process. tau 2 predict कर सकते हो, tau 3 कर सकते हो, tau 4, tau 5, any predicted burst time you can do. Given the base condition, given the boundary condition, given the value of alpha, you can find any next CPU burst of the process by using this technique. आप देखिएगा why is this called exponential averaging? जो terms आप add up होते जा रहे हो, average जो हो रहे हो, वो exponentially increase हो रहे हैं. First time it is 1 minus alpha, next level is 1 minus alpha square, 1 minus alpha cube, 1 minus alpha power 4, इस तरीके से. तो जो averaging हो रही, weighted averaging जो हो रही है, वो exponentially increase हो रहे हैं terms. So that's why this is called exponential averaging technique.
इसका और एक नेम है एजिंग एल्गोरिथम, इसे आप एजिंग एल्गोरिथम भी कह सकते हो, लेकिन पॉपुलरली वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग. So boys and girls, this is a very important formula and you can expect a gate question, gate problem based on this exponential averaging technique. जैसे कि सैंपल लेकर मैं सॉल्व करूंगा आपके आसानी के लिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. So let us see this question, boys and girls. Consider a system using exponential averaging technique. I'm writing in short, exponential averaging technique with alpha is equal to 0.5 and tau1 is equal to 10. Given the previous runs of process, generating the burst times in the order as 8, 12, 14, 10. Compute the next CPU burst. इस तरीके का प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी पूछा जा सकता है, राइट? ओके, मोहम्मद अशफाक, वेरी गुड, नाइस टू सी यू आल्सो. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू मेक अ ट्राई वर्किंग आउट दिस प्रॉब्लम? क्या आप बता सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर? वेरी इंटरेस्टिंग. It is purely based on exponential averaging technique. 2 mark ka question, you can say potential gate question, PGQ. You can call it like potential gate question. बोलिएगा. Values देखिएगा. Alpha is given as 0.5. Tau1 is equal to 10. Previous runs in the order are 8, 12, 14 and 10. मतलब this is T1, this is T2, this is T3, this is T4. तो प्रोसेस ने 4 रन्स कंप्लीट किए हैं T1 to T4 और हमें नेक्स्ट प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम के लिए पूछा जा रहा है. तो मतलब वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tau5. So boys and girls, as per equation, alpha is 0.5, so 1 minus alpha will also be 0.5. 0.5 is 1 by 2. 1 by 2 of T4 plus tau4, is it not? T4 क्या है? T4 की वैल्यू दी गई है 10 है. वी डोंट नो व्हाट इज tau4. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? tau4 को रिकर्सिवली फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो दिस बिकम हाफ ऑफ T3 प्लस tau3. ठीक है. सो दिस इज हाफ ऑफ T3 की वैल्यू दी गई है, दैट इज 14 एंड वी डोंट नो tau3. So we have to find recursively again tau3 using the same equation. So it become half of T2 plus tau2. तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू T2. T2 is given as 12 and we don't know tau2. We have to find tau2 again. यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं tau2. Tau2 will be again half of T1 plus tau1. Is it not? तो T1 की वैल्यू भी है, tau1 की वैल्यू भी है. T1 is 8 and tau1 is 10. So 18 by 2 बनेगी वैल्यू 9. So this is nothing but tau2. You have got the value of tau2. Tau2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा and you will get tau3. So half 12 plus 9 मतलब 21. 21 by 2 बनेगा 10.5. is nothing but tau3. 10.5 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, हाफ 14 प्लस 10.5, तो ये बनेगा 24.5 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस बिकम 12.25. इज इट नॉट? 12.25 लास्टली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. हाफ 10 है, 10 प्लस T4 की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 12.25. So this will become 22.25. 22.25 divided by 2. So 11.125. So boys and girls, this is the answer for the question.
11.125 is the next predicted burst time. Pawan Kumar is correct, 100%. Very good, Pawan. ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे विथ रिगार्ड टू द प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस. तो ये है बेटा द मेन एल्गोरिथम जो आप गेट एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर ए 2 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे. तो देखिएगा, इवन नाउ द पॉइंट इज, अगर आप इफ यू ट्राई टू स्टिल इंप्लीमेंट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम या shortest remaining time with predicted burst time, if you try to implement, still you will have the problem of starvation to longer processes. और अगर आप starvation problem को control करना चाहो, if you want to control the problem of starvation, then you need to have an algorithm. देखिएगा यहाँ पर वही है algorithm जो मैंने describe किया, determining length of next CPU burst time. Here is actual length of CPU burst, predicted value, so that is given by exponential averaging technique. Commonly alpha is said to half, but need not be. So why it is called exponential averaging? It is shown by means of expansion again in the same fashion. मैं यहाँ पर tau 1 लिया हूँ. Here he has taken the base as tau naught. Nothing, both can be used without any loss of generality. So next the question is, अगर आप shortest job first, if you implement with predicted burst time, still you will encounter the problem of starvation. हाँ, अगर आप problem of starvation नहीं चाह रहे हो, if you want to prevent starvation, then we have the algorithm, the fourth algorithm in sequence by name HRRN. HRRN stands for essentially highest response ratio next. Highest response ratio next. So this is the HRRN algorithm primarily for the problem of starvation. The basic objective of HRRN हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे. Let me write it down here. The objective of HRRN is to not only favor shorter process, but also limit the waiting time of longer process. Limit the waiting time of longer process. देखिएगा, objective is very clear. देखिए, favoring shorter process has an advantage. क्या है advantage? Increase throughput and minimum average turnaround time and waiting time. So favor the shorter process, but also somehow try to limit the waiting time of longer process, starvation, right? Control starvation. This is done by introducing a metric, by introducing a parameter by name response ratio. Let's call it as RR, small rr. So we are going to have a metric associated with process by name response ratio. What is the response ratio of the process? Response ratio इस तरीके से डिजाइन करा जाएगा, या response ratio ऐसे डिजाइन की जाएगी कि it will favor shorter process and also limit the waiting time of longer process. It will achieve both the things. How? This is D1 given by formula W plus S by S. What is W? W is the waiting time of the process. Waiting time of process. Waiting time of process so far. That is W. And what is S? S is the service time. Service time का मतलब burst time है. If only burst times are given, service time is same as burst time. नहीं, अगर burst time है, IO burst time दोनों है, तो service time is an inclusive of both. So that is service time. So boys and girls, if you look at this equation W plus S by S, right? In the denominator we have S. तो इसका मतलब ये हुआ कि if burst time, service time is less, response ratio will be high. उसी तरह if the process waiting time become more, अगर process का waiting time अच्छा sufficiently बढ़ गया है, if the waiting time the process become large, numerator become large, और numerator जब large हो जाएगा तो response ratio भी बढ़ जाएगा. So naturally, by looking at the formula, we can very well justify that it should favor shorter process and also going to limit the waiting time of longer process, right? दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन we have to prove it by taking a suitable data set. ऐसा नहीं है कि theoretically proof कर लें,
डेटा सेट से भी प्रूफ करना जरूरी है कि कैसे वर्क करेगा। तो एल्गोरिथम इज, लेट मी टेल यू, whichever process at any point of time is having highest response ratio, that is going to run first. Process having the highest response ratio at any time is always going to run first. That's why it is called highest response ratio next. And the mode of working of this algorithm, is non-preemptive. क्योंकि ये एल्गोरिथम को हम कंपेयर करेंगे प्योरली शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से, प्योरली शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से कंपैरिजन किया जाएगा. That's why this algorithm works in a non-preemptive way, so that you can compare the performance of HRRN with SJF. तो चलो बच्चों देखेंगे कि वर्क कैसे करता है by taking a suitable example. तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे बच्चों. I will take the following data set. Let's say the process number, arrival time and burst time. Let's say 5 processes. You can take any arrival times. I will take the following: jumbled arrival times or any arrival times you can have, and let's say 3, 6, 4, 5, 2, something like this. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम SJF का गैंट चार्ट बनाएंगे and then we will try to see how starvation is happening in SJF. पहले वो प्रूफ करेंगे and then how that starvation is limited, controlled by HRRN, ये हम देखेंगे. तो चलो बच्चों सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे using SJF. यहां पर बनाएंगे SJF. Please see on board. At time 0, we have only P1. So P1 need 3 units of time. So P1 completes at time 3. Non-preemptive. SJF is non-preemptive. Now by time 3, if you observe closely, we have only process P2. So हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है other than scheduling P2. Taking 6 units, so 3 plus 6, 9, non-preemptive. ठीक है, वेरी गुड. तो अब नेक्स्ट क्या होगा देखिएगा प्लीज. नाउ बाय टाइम 9 अगर आप देखो, वी हैव रिसीव्ड द रिमेनिंग प्रोसेसेस P3, P4, P5. इनमें सबसे जो शॉर्टर बर्स्ट टाइम है वो P5 है. सो P5 विल गेट शेड्यूल्ड हियर फॉर 2 यूनिट्स. 9 plus 2, 11. इसके बाद रन करेगा P3 4 यूनिट्स के लिए, मतलब 15, एंड लास्ट में रन करेगा P4 5 यूनिट्स के लिए 20. दिस इज SJF. तो यहां पे आपने बताना है कि वेयर इज स्टारवेशन. कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स वेयर एंड हाउ स्टारवेशन इज हैपनिंग हियर. यू कैन चेक ऑन बोर्ड. P3 came at time 4. At time 4 P3 came and P5 came at time 8. Here is time 8. तो देखिएगा P5 came just now at time 8 and time 9 it got scheduled. So this is favoring shorter process. Or P3 came at time 4, it got scheduled at 11. It has caused starvation. So this is starvation to P3. P3 has waited quite a long time from 3 units to 11 units. P5 came just now at time 8 and time 9 it immediately got scheduled. That is favoring shorter process and thereby causing starvation to P3 and P4. So that should not happen. So therefore, how are we going to overcome this problem in HRRN? Let us try to monitor here. तो HRRN में क्या होगा, यहां पर हम गैंट चार्ट बनाएंगे और स्टडी करेंगे. चलिए, so let's say this is the Gantt chart for HRRN. Time 0. So look at this, boys and girls. Yes, Pawan Kumar, that is correct. So look at this. At time 0, we have only P1. तो जब एक ही प्रोसेस अवेलेबल हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इज नो मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग का मतलब है मेकिंग ए डिसीजन. डिसीजन आपको बनाना होगा. डिसीजन यू हैव टू मेक द डिसीजन व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस. अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो तब देयर इज अ मीनिंग ऑफ मेकिंग ए डिसीजन. So I have only one process, so there is no need to compute response ratio. कहना की बात यह है कि there is no need to make any compute response ratio. I don't need to make any response ratio computation. So at time 0, I have to start with process P1. Runs for 3 units. So completes at time 3.
completes at time 3. Then what happens? At time 3 again you see there is only one process P2. There is only one process. तो बार बार आपको वही कह रहा हूं कि if there is only one process, absolutely there is no need to compute response ratio, there is no need to make any decision. जो भी process available हो आप उन्हें ही run करोगे, because this is also non-preemptive. So P2 is the only process complete at time 9. At time 9 now, at time 9 we have 3 processes. Now I have to make a decision. उसके लिए मुझे response ratio compute करना पड़ेगा. तो सुनिएगा, at time 9 I will write it like this. At time 9 हम response ratio compute करेंगे for the processes that are there in the ready queue. पहला process है 3. Response ratio of process 3. W plus S by S. Process 3 came at 4. Time is 9. मतलब कितने time के लिए wait किया? 5 units के लिए. Plus what is its burst time? 4 units. So 5 plus 4 divided by 4. ये बनेगा 9 by 4. 4 to the 8. 4 to 25. 2.25. Something like this. What is response ratio of process 4? 4 came at time 6. Time is 9. 6 to 9. 3 units. 3 plus its burst time is 5. 3 plus 5 by 5. So this become 8 by 5. 1.6. What is response ratio of process 5? Came at 8. Current time is 9. 8 to 9. 1 unit. So 1 plus 2 by 2. 3 by 2. 1.5. तो बच्चों देखिएगा, which process is having higher response ratio? Response ratio of process 3 is higher. So who is going to run? P3 is going to run. P3 is going to run. Is it not? P3. That's the point. So P3 का burst time है 4. 9 plus 4 मतलब 13. Now at time 13, boys and girls, at time 13, do we have to recompute response ratio? क्या हमें response ratio फिर से compute करना पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा. इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस विल इंक्रीज और विल चेंज. तो हमें फिर से रेस्पॉन्स रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा. जो रेस्पॉन्स रेशियो हमने पिछले बार यूज किया था टाइम 9, वो यूज नहीं कर सकते हो आप. सो यू हैव टू रिकम्प्यूट द रेस्पॉन्स रेशियो. सो एट टाइम 13 आई विल रिकम्प्यूट द रेस्पॉन्स रेशियो ऑफ द पेंडिंग प्रोसेसेस. पेंडिंग प्रोसेसेस कौन से है? P4 एंड P5. सो व्हाट इज द रेस्पॉन्स रेशियो ऑफ प्रोसेस 4? प्रोसेस 4 came at time 6, got schedule, current time is 13. 6 to 13 मतलब 7 units it has waited. 7 plus burst time 5 by 5. 12 by 5 मतलब 2.4. and response ratio of process 5. Process 5 waited from 8 to 13 मतलब 5 units. इसका burst time है 2 divided by 2. 7 by 2. 7 by 2. 3.5. So which process is having higher response ratio? Process P5 is having higher response ratio. मतलब अब हम P5 को शेड्यूल करेंगे. P5 need 2 units. कंप्लीट हो जाएगा 15 पर. फिर लास्ट में एक ही प्रोसेस बचा P4, उसे कंप्लीट कर लेंगे हम 20 पर. तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज HRRN. आपका ऑब्जर्वेबल डिफरेंस वेरी क्लियर है, राइट? द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इज दिस. हियर यू हैव फेवर्ड शॉर्टर लॉन्गर प्रोसेस. लॉन्गर प्रोसेस के बाद आपने शॉर्टर प्रोसेस को फेवर किया. अगर फिर से लॉन्गर प्रोसेस को आप फेवर करते तो आपका थ्रूपुट और एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगा. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. द डिफरेंस, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इज हियर. P5, P3, P3, P5. The observable difference between shortage of first and basically HRRN is this. It will favor longer process and then shorter process so that I can have a balance in the system. So therefore HRRN will try to not only favor shorter process but also limit the waiting time of longer process. So this is the working principle or paradigm of shortage of first and HRRN with an intention to limit the waiting time. हम ये नहीं कहेंगे there is no starvation. Starvation is there. देखिएगा P4 is still suffering, but to certain extent it has been curtailed. It has been reduced to certain extent. That is what we would try to say. So that is the ideology of HRRN. चलिए एक और शेड्यूलिंग टेक्निक क्विकली ले लेते हैं before we try to conclude, and that is nothing but again an important one. Sixth technique, priority based scheduling. Priority based scheduling. So as you know, priority is one of the, yes,
Priority is one of the attribute of a process, and priority is computed at the time of process creation. And priority आप compute करोगे by using several parameters, like you can say type of process, size of process, number of resources that the process can use. Based on several parameters आप priority compute कर सकते हो. So that means by taking a function, by using a function with several parameters like type of process, size of process, the resources that the process use, you can always compute the priority as an integer value. Priority as an integer value. Priority as an integer value. Priority may be of two types. You can have static priorities or dynamic priorities. You can have static priorities or you can even have dynamic priorities. Static का मतलब यह है कि once you assign the priority, once you compute and assign the priority, it cannot change. It cannot change. That is static. It will always remain. So static priority का naturally drawback क्या होगा? Tell me, what will be the drawback of static priority? The main drawback of static priority is starvation. Starvation. Starvation to low priority processes. Starvation to low priority processes. तो ये starvation अगर आप overcome करना हो, then you will have to go for algorithm called aging. Aging का मतलब at regular intervals of time you are going to increase the priority of the process. At regular intervals of time आप priority of process increase करोगे. That means it is not going to remain static. It is always going to be dynamic. So that algorithm is called aging algorithm, जिसकी वजह से हम dynamic priorities बनेंगे. So that is dynamic priorities. Right? So over a period of time, low priority process would become high priority. Low priority process would become high priority process. So that is priority based scheduling. And the way of working, the modality of working, it can work in two modes, either non-preemptive or preemptive. It can work in two modes, non-preemptive and preemptive, just like SJF and SRTF. उसी तरह ये है. And let me tell you, boys and girls, one more point, that the working of priority based scheduling, listen to me carefully, the working of priority based scheduling is absolutely similar to, 100% similar to SJF and SRTF, except that वहां पर हम SJF और SRTF में burst time हमारा criteria था, यहां पर priority होगी. Otherwise, absolutely both are same. Absolutely both are same. So therefore, as a comment I will add for your notes, as a comment I will add working of priority based scheduling. Working of priority based scheduling is exactly similar to SJF and SRTF, except that here we look at priority other than burst time. तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम वेरी श्योर यू कैन डेफिनेटली फॉलो इट. ओके, यू कैन डेफिनेटली फॉलो इट. सो क्या करेंगे, हम एक सिंपल डेटा लेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज प्रोसेस नंबर एंड प्रायोरिटी. प्रोसेस नंबर एंड प्रायोरिटी. Process number, priority, arrival time and burst time. Initially I will take a very simple data set. All processes are having same arrival time 0, burst time are something like 4, 5, 2, 3 and priority is something like 4, 5, 8, 6, something like this. अब बच्चों यहाँ पर एक कन्वेंशन ये है कि कौन सा नंबर is taken as high priority and which number is taken as low priority. I mean to say lower number is high priority or higher number is lower priority. A convention follow करना पड़ेगा, right? I have seen both the conventions in the exam, in the questions. In some cases they say lower number is high priority and higher number is lower priority, and in other convention they follow higher number is higher priority and lower number is lower priority. Anything can be followed. So here I follow
the natural convention that higher number is higher priority. Higher number is higher priority. I follow this convention. It can be reverse also. I am telling very clearly, it can be reverse also. तो यहां पर देखिएगा, this is highest priority and this is the lowest priority. So prepare the Gantt chart using both non-preemptive and preemptive priority-based scheduling for this data set. Prepare for both. So let us prepare the Gantt chart. Look at this, boys and girls. So first I am doing for non-preemptive priority. Non-preemptive priority. At time 0, all the processes are available. All the processes are available. So therefore, at time 0, who will run? P3 will run. P3 will run for 2 units. So 2 units. इसके बाद कौन रन करेगा? इसके बाद P4 रन करेगा. 3 यूनिट्स के लिए रन करेगा. 2 + 3 5. इसके बाद कौन रन करेगा? इसके बाद P2 रन करेगा. Right? P2 will run for 5 units. Right? 5 units. So therefore 10. Then finally, lastly, P1 will run. P1 will run for 4 units. So therefore 14. This is it. So P3 followed by P4, followed by P2, followed by P1. Followed by P1. This is non-preemptive priority. Can you tell me preemptive priority, will it be same or different? Come on, tell me. Will preemptive priority for this data set, will it be same or different? ये data set के लिए preemptive priority based scheduling से आप अगर आप वन करो और work करो, then what will be the Gantt chart? Will it be same or different? Pawan, what will happen to preemptive based priority scheduling for this data set? Will it be same or different? Preemptive priority based scheduling के लिए अगर आप Gantt chart बनाओ ये data set के लिए, will it be same or different? It will be same. No, Pawan, it will be same. Because preemption will happen based on the arrival of new process. सुनिएगा, all processes are available in the ready queue at time 0. All processes are available at time 0. तो आप statically decide करोगे कौन सी which process will run. So therefore, the same Gantt chart will apply for preemptive priority based scheduling. Same Gantt chart will apply for preemptive priority based scheduling. Absolutely, there will not be any difference between them. And based on this data, if you want, you can calculate the average turnaround time, average waiting time, etc. Average waiting time, average turnaround time. Yes, same arrival time. That's why it is possible. And now coming to, other data set we'll take, another problem we'll solve perhaps in the next session. लेकिन class close करने से पहले 2-3 doubts जो पिछले बच्चों ने पूछा था वो कहना चाहूँ. Somebody was asking, sir, PYQ कौन से कहाँ से करें, PYQs questions कहाँ से लें? देखिएगा बच्चों, there are many online platforms are available from where you can get the PYQ questions you can solve. Or else there are certain textbooks also available, right? There are some books available in the market. आप देख सकते हो. I don't want to make a mention. तो books भी आप ले सकते हो and in the books you can take up the question. But my appeal is, जब आप PYQ solve कर रहे हो तो make sure that you solve it very seriously. Don't solve the PYQs very casually and result in wastage of PYQs. So solve it very sincerely and seriously, assumingly as if you are working in the exam. ठीक है. और जो बच्चे पूछ रहे थे कि basically is 3 months sufficient enough, 6 months sufficient enough for preparation of GATE? Ideally speaking, definitely, I said, I have seen even, we have guided even people studying and successfully getting better rank with 3 months and 4 months preparation also. So definitely 6 months of time is a good amount of time for you to start preparation. So for subscribing to the courses, if you are interested in coaching, then download the Unacademy app and then you can see what are the various batches available and which batch is most suitable. देखिए, you can take the full subscription, you can take one batch subscription, right? Anything, or one subject subscription. Test series भी आपको free of cost available है. All the details you can see from the Unacademy app, and you can download and you can even attend our free classes in Unacademy app, right, where we are teaching all the concepts, and DPPs also we are solving free for the students, so that DPP में PYQs भी होंगे. So that will be a good atmosphere, good ecosystem. I would say the Unacademy has an good ecosystem for the GATE aspirants to prepare for GATE as a one-stop solution. ठीक है?
So that's it for today's session, boys and girls. Hopefully next session में हम priority based scheduling complete करेंगे, round robin भी complete करेंगे, and then we'll take up some PYQs on the CPU scheduling techniques. Okay. So thank you so much. Take care and continue your good study. Thank you.